Namaskar. A very warm welcome to the 30th episode of Ask Our Experts. I'm your host, Shipra Abraham, and today we are diving into one of the most futuristic and game changing conversations of our time semiconductors. Why? Because semiconductors are the invisible heroes of our digital lives. From the smartphone in your pocket, the laptop you work on, the car you drive, to the medical devices that save lives, all of them run on these tiny chips. And today, India is on a bold journey to become a global hub in this $1 trillion industry. At the heart of this vision is SEMICON India 2025, the flagship event which will be taking place at Yashobhoomi Dwarka, will bring together innovators, industry leaders, startups and policymakers all working to script India's semiconductor success story. So don't wait and register today at www.semiconindia.org. Once you register, you will receive an e-badge or a digital badge on your registered email ID as well as the mobile number. So friends, to share with us more about this industry, the semiconductor industry, and this flagship event called the SEMICON India 2025, we have with us eminent experts today. I welcome to the show Shri Amitesh Kumar Sinha, Additional Secretary MeitY and CEO, India Semiconductor Mission. Shri Vivek Khaneja, Executive Director, CDAC Noida. And Ashok Chandak, President, SEMI India and India Electronics and Semiconductor Association. So buckle up for an electrifying discussion on technology, opportunity, and India's leap into the future of chips. I request all our viewers to write their questions in our YouTube live chat around the SEMICON India 2025. Your questions can earn you the title of Digital India Question Ninjas. So let's begin with our questions. My first question would be to Shri Amitesh ji. Sir, India is being seen as the next big hub for semiconductor manufacturing. How do you see this changing our global positioning in the coming decade? Thank you, Shipra ji. Thank you. We all know that semiconductor is the new oil for today's world, industry world. And whatever thing is moving and having electronics aspects, semiconductor chips are the essential. India has to develop capability in this particular sector because semiconductor is foundational and a strategic industry. If we have capabilities, then we can do anything, right from starting from a very small applications of electronics to the space and defense applications that is required for the country. After announcement of SEMICON India program by Honorable Prime Minister, 76,000 crore rupees package was this. India Semiconductor Mission, which is the flagship of Ministry of Electronics and IT, is appraising the proposals that is submitted in India Semicon program. And so far we have approved 10 projects spanning from fabrication of semiconductor chips from 110 nanometer to 28 nanometer, as well as packaging, advanced packaging and compound semiconductor. So in semiconductor journey, there are three main facets and other facets are supporting that. One is design, fabrication and packaging. And the SEMICON India program covers all three aspects, and we have very good traction in design also. So I see that India in future will become a very promising country, and we will take a leadership role in few sectors. And we think that design is our forte, advanced packaging also our forte. We will also will try to take leadership in compound semiconductor fabrication. So these initial areas are there for our interest, and later on we will also enter into cutting edge technology nodes which is lower than 28 nanometers. So I see India as a very big player in coming decade. Thank you, sir. So you mentioned about the design bit of it. So how is India Semiconductor Mission nurturing India's strong design talent pool for global impact? So for nurturing of design talent pool, first of all is systematic curriculum. So with the help of industry, academia and government, we finalized a curriculum that has been implemented by AICT, which is a nodal body for technical institutions. So more than 500 colleges have implemented the revised curriculum,
which is circumcising all aspects of semiconductor from design, manufacturing and packaging. So first is structural change, that we have done in curriculum. Second is we are running a program called Chips to Startups, and also a DLI scheme, which is a part of SEMICON India program. With the help of these two schemes, we have already provided training to 60,000 engineers. And what is the model there? So we have provided very costly EDA tools, which is the software tools required for the designing of semiconductor chips. So we have provided this to more than 280 institutions, academic institutions across the country, and more than 70 startups. So they are now using these tools and designing their semiconductor chips. You will be very happy to note that the chips designed by students have been manufactured in our own fab, semiconductor laboratory at Mohali, and packaged also. So we have already done 28 such tape outs after launch of DLI scheme along with the C2S. So that way we are nurturing our talent. Opportunity wise, we are giving them opportunity in the form of design link incentive, which provides a 3-tier structure support. One is the EDA tool support. Second is from a design to tape out of a tape out, meaning that a chip designing process is complete and a chip has come out as a result of that. So this tape out support is 50% from design to tape out, and the third level is deployment of those chips in commercial production. So the deployment will take place because designing itself is a time-consuming process and generally takes 1.5 years to 2 years to 3 years depending on the complexity of the chips. So this is the opportunity that we are giving to our startups. So after nurturing their talent, this is opportunity for them to become entrepreneur. And then they have also opportunities in MNCs. All design companies are working in India. Either they have their largest or second largest capacity, manpower capacity for designing of cutting edge semiconductor chips. So they can also contribute there, learn something from there, and then they can also start their own entrepreneurial journey. So this way we are nurturing the talent. Thank you, sir. This brings me to Ashok sir now. Sir, if we talk about the government policies, how are they shaping up the semiconductor industry? If you can share some examples of success with us. Sure. So Government of India and also several state governments have already recognized semiconductor sector as strategically important for India from the perspective of national security, digital sovereignty, as well as the economic growth engine. And very comprehensive policy framework has been defined over the years, which has been rolled out and got a tremendous response and attraction from not only the global industries, but also Indian corporates and conglomerates. And we have seen a good progress over the years. There are several facets to these schemes actually that spans across the materials to design, to packaging, to final assembly and electronic equipments. And at the center of this scheme is the SEMICON India program, which is about 76,000 crore or $10 billion package, which was announced to be provided to the fabs, the OSATs, the displays, compound semi and others. It's already 10 projects, as Amitesh just mentioned, have taken advantage of these schemes and projects are announced and these are getting implemented. Plus the DLI, which helps in terms of the design activities to create the fabless ecosystem in the country, create the electronic products enabled by the India designed semiconductor products. That is also progressing pretty well. But also we need to look at this sector in a more holistic way in terms of the policy initiatives because there are several policies for electronic sector as well, and anything which is enabling the electronic sector has a direct impact on a semiconductor demand and consumptions. So all electronics policies related to the PLI, the electronic manufacturing clusters, the support provided to the academia also adds to the holistic approach. And that is why I mentioned the word, it's a very comprehensive set of policy framework, which is very holistic in a view that it enables not only chip design, manufacturing, packaging, but also towards the electronic products. And this end-to-end enablement is very important. Most important point I would like to add here for the viewers is, in addition to the central government policies which are announced by METI under ISM, several state governments have also added
their additional policy framework, which helps in terms of setting up the plants, the infrastructure, the roads, the related water treatments and other whatever things are required for setting up the plants and making it operational, including the power supplies and all those. So together this combined efforts of the both central and state government policies is really helping to take off the semiconductor manufacturing in the country, which has been a bit delayed compared to other country perspectives. Thank you, sir. Since we are talking about DLI, I'll go to Vivek sir now. Sir, from an entrepreneurial perspective, what key enablers like talent, funding, IP, design ecosystem, fabrication access are most critical for startups to succeed? Thank you, ma'am, for this question. So as sir said, DLI is one of the integral parts of the Indian semiconductor mission, where the focus is to enable the startups, MSMEs and domestic companies to produce chips in India to fill up this void that we have, because we end up importing a lot of chips for the electronic products that we are manufacturing in India. Now, unlike various other industries, semiconductor design industry has some very peculiar requirements for success factors, or you may want to call them. One, of course, is talent. Talent is one of the key critical components for success of this ecosystem. And India is fortunate and blessed in a sense that today we are home to a large number of highly skilled semiconductor designers who are working both as entrepreneurs and also as employees in various MNCs in the design houses. According to an estimate, 1 in 5 designers in semiconductor domain is an Indian, which is very heartening to note. The other success factors include access to the design tools and IPs. These are fairly expensive. As Amitesh ji said, that the access to the design tools for designing these chips, converting them into actual schematics, circuits, and then taping them out so that they can be fabricated in our fabs is done through these design tools, which come from various suppliers. And these are fairly expensive tools. So if we can democratize access to these tools and provide them to our startups, that would be a big help. Similarly, a major cost factor which goes into the design of any semiconductor chip is the cost of the IPs. So if we can have an arrangement where we could provide an IP pool or reusable IPs that can be used across the board by these startups, that would also be a big help to the startups and the designers who are doing these designs. One other critical factor is the access to the fabrication facilities, both in terms of scale up and also initially for the prototyping. Unfortunately, we are a little late in terms of setting up our own fabs, although there are now very strong initiatives to have our own fabs. But so far, the design fabrication happens outside the country. So access to those fabs is also one of the critical factors. A couple of other factors which are often missed out are one, access to capital, especially risk capital, because semiconductor design is a fairly expensive and a lot of risk is involved in terms of early failures. So access to a risk capital for these startups is another big critical factor. A fourth factor is availability and access to an anchor customer, because so we are not doing these designs just for our intellectual satisfaction. These designs eventually will end up into products and solutions. And therefore, if we have early access to these markets, it can help us to optimize those designs. And working with an anchor customer also helps us to customize the design as per the end needs. And then, of course, the policies of incentives and the government support goes a long way in supporting the startups and the ecosystem. So all in all, at least these factors have to be kept in mind if we really need to have a thriving semiconductor design ecosystem in this country.
जी सब देन इसी के आगे मैं अगर पूछूं लाइक हमने अभी क्रिटिकल फैक्टर्स की बात करी, अगर हम करंट लैंडस्केप देखते हैं उसके अंदर आपको क्या लगता है व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ्स इन इंडिया? And the biggest strength that we have, I would put two of our biggest strengths. One, of course, is a very strong talent capital. India, as I said, has a large talent pool of semiconductor design. Although we are good in design, we are still catching up on the fabrication and the ATMP and the OSAT parts. And for that, there has been very comprehensive review of the syllabi across various institutes, taking into account the inputs coming from both academia and industry. The second most important factor which works in our favor is a very, very strong commitment from the government. The kind of incentives that are today being provided in terms of providing free access to the EDA tools is one of its kind in the world. Nobody in the world has made these kind of provisions to any other startups. So to me, at least, these are our most critical and most important factors that can go a long way in helping us to succeed. थैंक यू सर. जी मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ. श्योर सर. जैसा कि विवेक खनिजा जी ने बताया कि ईडीए टूल्स का जो सपोर्ट है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हमारा है. हम लोगों ने डेटा को चेक किया है और ये पाया है कि जो इस तरह का गवर्नमेंट की तरफ से एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को ईडीए टूल सपोर्ट दिया गया है ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट सपोर्ट सिस्टम का एक एग्जांपल है. जिसमें 280 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को हम लोगों ने सपोर्ट दिया है. और आपको जानकर खुशी होगी कि जनवरी 2025 से लेकर अगस्त तक 11.5 मिलियन आवर्स ईडीए टूल्स के यूसेज स्टूडेंट्स के द्वारा किए गए हैं. वेरी वेल सर. सर अब हम सेमिकॉन इंडिया के बारे में बात करते हैं. सो अमितेश सर, आई विल स्टार्ट विद यू. व्हाट मेक्स सेमिकॉन इंडिया 2025 वन ऑफ द बिगेस्ट एडिशंस येट? मैं ये देखता हूँ कि जिस तरह का पार्टिसिपेशन इसमें हो रहा है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कंट्री का पार्टिसिपेशन क्या है इसमें. तो इसमें आप देखेंगे कि 4 कंट्रीज़ ने एग्जीबिशन एरिया में अपने पेविलियन लगाए हैं. तो 4 कंट्री में सिंगापुर, मलेशिया, जापान और साउथ कोरिया, इनकी कंपनीज़ आ रही हैं जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाहती हैं टू सपोर्ट ecosystem, to have collaboration tie-ups with Indian companies, or they can set up their own manufacturing system also. तो एक तो उस एंगल से बहुत अच्छा लग रहा है. दूसरा कि इसमें राउंड टेबल्स हैं 6 कंट्री के. तो जो 4 कंट्री के हमने नाम बताया, सिंगापुर, मलेशिया, जापान और साउथ कोरिया, उसके अलावा यूएसए और नीदरलैंड के भी राउंड टेबल्स हैं इसके अंदर में. इसमें हम ये एम कर रहे हैं कि जो कंपनीज़ इन कंट्रीज़ की हैं वो इंडियन कंपनीज़ के साथ में आपस में बातचीत करें. उनके कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं इस मीटिंग में, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पार्टिसिपेंट्स भी रहेंगे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और दोनों साइड की कंपनीज़ आपस में एक दूसरे के स्ट्रेंथ को लीवरेज करें ताकि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वो बड़ा हो. तो ये कंट्री का इंगेजमेंट हो गया. स्टेट के हिसाब से देखें तो 9 स्टेट पवेलियन इसमें लग रहे हैं, जो कि पिछली बार की तुलना में ज़्यादा है. और 10 स्टेट्स ने अपनी डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी निकाली हुई है. तो स्टेट के तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन इसमें हो रहा है. और वो भी चाहते हैं कि इस फोरम में आकर के और जो कंपनीज इंटरेस्टेड हैं मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाने में, वो उनको मोटिवेट करें. अब जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि डिज़ाइन के इकोसिस्टम के लोग भी हैं, जिसमें कि डिज़ाइन कंपनीज़ हैं. मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए एक तो हम अप्रूवल्स गवर्नमेंट ने दिए हैं, उसके अलावा उनको चालू करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए केमिकल, गैसेस, मटेरियल्स, इक्विपमेंट सपोर्ट, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है. और बड़ी भारी मात्रा में वैसी कंपनीज यहाँ आई हैं. तो 400 से अधिक डोमेस्टिक और मोस्टली ग्लोबल कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं इस इवेंट में. इसके अलावा हम लोगों ने एक वर्कफोर्स पवेलियन बनाया है, जिसमें कि जो स्टूडेंट्स आएंगे हमारे, उनको मेंटरिंग भी किया जाएगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. साथ में उसमें कुछ सेशंस होंगे जो कि उनको एक्सपोज करेंगे डिज़ाइन के लिए, फैब्रिकेशन के लिए, पैकेजिंग के लिए. उसके अलावा डिफरेंट कियोस्क रहेंगे जहाँ के हमारे एक्सपर्ट्स रहेंगे इस इंडस्ट्री के,
वो स्टूडेंट को गाइड करेंगे कि आगे आपको कैसे इस इंडस्ट्री को में आपके क्या इम्पोर्टेंट रोल हो सकते हैं और आपको कैसे अपने करियर को परसू करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देख करके मुझे लग रहा है कि ये पहले की तुलना में एक बड़ा आकार ले रहा है और ये 4th एडिशन है हमारा, और हर साल हम देख रहे हैं कि इसमें नए नए एडिशन होते चले जा रहे हैं। जी, थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि सर ने बताया, ये एक तरीके से पूरा सेमीकंडक्टर की एक नई दुनिया सेटअप करी जा रही है, सेमिकॉन इंडिया जो इवेंट है। सो आप ज़रूर रजिस्टर करिए सेमिकॉन इंडिया इवेंट के लिए। हमारी जो वेबसाइट हमने पहले बताई थी semiconindia.org पे। सर, अभी आपने एक डिटेल में हमें बताया, अगर हम स्पेसिफिकली कुछ यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, व्हाट यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ विल दिस इवेंट हैव फॉर द पार्टिसिपेंट्स? तो पार्टिसिपेंट्स में मैं पहले स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स से। स्टूडेंट्स में जो आएंगे, जैसा मैंने कहा कि वर्कफोर्स डेवलपमेंट का एक पूरा का पूरा पवेलियन है हमारा। उनको उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, मेंटरशिप दी जाएगी, गाइड किया जाएगा और कुछ ट्रेनिंग भी दिया जाएगा फैब्रिकेशन और पैकेजिंग और डिज़ाइन के लिए। इसके अलावा जो इंडस्ट्री के प्लेयर्स आ रहे हैं, ग्लोबल इंडस्ट्री के, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के, वो लोग अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। कुछ लोग शोकेस करना चाहते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को, कुछ लोग दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, कुछ लोग इंडिया इकोसिस्टम को जज करना चाहते हैं कि यहाँ लगाना कितना फिजिबल है। प्लस हमारे जितने अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स हैं 10, वो भी इस प्रीमाइसेस में रहेंगे, सेमिकॉन के प्रीमाइसेस में। तो सब लोगों के बीच में इंडस्ट्री वालों को एक अलग सिनर्जी मिलेगी। जो R&D में और इंटरेस्टेड हैं, वैसे इंस्टीट्यूशन भी इसमें आ रहे हैं जो कि ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के साथ मिल करके कैसे एक R&D का इकोसिस्टम हम तैयार करें। साथ ही साथ में आप अगर स्टेट्स को देखेंगे तो वो अपने पॉलिसीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, वो भी सिनर्जी स्थापित करना चाहते हैं जो इंडस्ट्री आ रही है यहाँ पर उनके साथ में मिल करके। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम है कि सब लोग को एक जगह इकट्ठा करके, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं, और उनको अपने पॉलिसीज़ के बारे में बताना, स्टेट की पॉलिसीज़ के बारे में बताना, जो हमारे इनिशियल सक्सेसेस मिले हैं उनके बारे में बताना, डिमांड जो मार्केट हमारा ग्रो हो रहा है उसके बारे में बताना, और सबको मिला करके हर स्टेक होल्डर को इसमें कुछ न कुछ मिलने की संभावना है। और उनको अपने जो मोटिव से वो यहाँ आ रहे हैं, उस मोटिव में उनको सफलता मिलेगी सेमिकॉन में पार्टिसिपेट करके। जी, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। ज़रूर सर। तो सर ने बड़ा डिटेल में बताया वैसे, बट पॉइंट ये है कि समरी जो है कि ये नेटवर्किंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन के उभर कर आ रहा है, क्योंकि इसमें सारे इंडस्ट्री के लोग, इंडियन इंडस्ट्रीज़, ग्लोबल इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप, MSME, लार्ज कॉरपोरेट्स प्रेजेंट है, गवर्नमेंट है, एकेडमिया है और पॉलिसी मेकर्स है, और ये सब लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बात करने का, इसमें चर्चा करने का पूरा अपॉर्चुनिटी है, और अपना अपना बिजनेस प्रमोट करना है और बढ़ाना है, जॉइंट वेंचर करना है, पार्टनरशिप करना है, वो सारे इसमें चीज़ें निकल कर आएगी। और इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रोड मैप है पर्टिकुलरली, जो भी बड़े तेज़ी से आगे दौड़ रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी और इसमें अपॉर्चुनिटी निकल कर आएगी, क्योंकि सारे ग्लोबल के लोग यहाँ पर प्रेजेंट है और इंडिया के कई कंपनीज़ को पार्टिसिपेट करना है इस सेक्टर में। तो उनके लिए ये नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी से मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट को स्टेप अप करने का बहुत अच्छा मौका है। राइट सर। सर, इसी के बारे में मैं आपसे अगला ही सवाल पूछना चाहती थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मार्केट का जहाँ तक सवाल है, व्हाट आर द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दैट यू सी इन दिस मार्केट इन इंडिया? So in India right now what we see is an unprecedented growth opportunity for both electronics and semiconductor sector. Currently India electronics manufacturing is about $150–160 billion in terms of the total market size. As per the various analysis those have been done, future forecast, it is likely to increase about $500 billion by 2030. So it's a substantial step up which is going to happen actually. Parallelly, the semiconductor demand, which is today about $45–50 billion, is going to increase to more than $100 billion by 2030. So in both the sectors, electronics and semiconductor fulfills adds into the electronics obviously, there are tremendous opportunities those are emerging in terms of the demand profile. Now that gives opportunity to every segment and every aspect of the value chain. So in this we would see the design ecosystem, the assembly, test, packaging, the manufacturing, the electronic system manufacturing, testing, all those things would get a fillip. And that way we would see that this is also tending towards making not only India a self-reliant, but also creating the opportunities for the exports.
because typically we have seen the semiconductor and electronics are also global markets. Particularly semiconductor is a global industry. So industries is not only making the semiconductors for one particular country, but also it is making the semiconductors for the world. So that way, there's a lot of opportunities are going to emerge here considering the growth rates and prospects. And we would see the opportunities for every segment here, which is the startup community, the academia for R&D, IPR development, the small medium enterprises for even electronic components, small semiconductor components in terms of value chain, the chemicals, the gases, those are also equally important for making the fabs and OSATs operational, plus the ATMPs, the fab, and finally system design. So it's all end-to-end, including materials, which will find the opportunities over here. Definitely, sir. Thank you. Vivek, sir, let's talk about the DLI scheme again. Have Indian startups been able to leverage DLI effectively? What tangible impact has it created so far for the startups? Okay. So as I said, there are certain very specific characteristics for this industry. You need talent, you need capital, you need IPs and EDA tools, you need customers, and you need strong government support. Now, within this context, so in terms of the IPs and EDA tools, we have set up the National EDA Tool Grid at our Bangalore center, which is called CHIPIN, which is providing not only the tools to the startups, it is also providing a lot of handholding and trainings. More than 250 training sessions have been conducted by all the major EDA tool vendors. We have also had support from the SCL team, and so this has been extremely useful to help the complete design ecosystem. In terms of the IPs, we have got specific arrangements with large IP suppliers to ensure that we get these IPs at a reasonable cost to our startups. We have got specific arrangements done again with value chain aggregators like IMEC, also with SCL, so that these designs can be fabricated, at least the prototypes can be done using the MPW shuttles. In terms of the numbers, if I talk, so far on the design linked incentive side, we have been able to shortlist 23 startups who have been provided fiscal incentives in multiple domains, starting from AI accelerators to communication chips for beamforming to power management ICs and so on. Similarly, more than 70 startups have been also provided access to the EDA tools, as Amitesh said earlier. In terms of the impact that it has created, so far the projects that we have approved under the DLI scheme, their total value is in excess of 750 crores. And they are in various stages of design. Some of them are in early stage, some of them are in middle of their design cycles. Out of which about 265 crores is the committed fund that we have so far done to these startups. And what is encouraging is that since the government is pitching in with this kind of a support, we see a lot of traction in the venture capital ecosystem. They are also stepping in, and so far almost about 380 crores of funding has been arranged by the startups. Recently, one of the startups announced a funding of 107 crores, which is unprecedented in India. I mean, if you look at the ecosystem in this country for the unicorns, I mean, as of August 25, we had about 118 unicorns. Unfortunately, none of them is in deep tech design, which is very surprising because, I mean, on one hand, we say that we have a talent pool, 1 in 5, or almost 20% of the world design force is of an Indian origin. And here we are where we are not seeing a lot of funding being generated and a lot of unicorns being coming out. There's not even a single Indian headquartered product design company, which is really sad. But I hope that with these incentives that the government is putting in place, the SEMICON India program, the DLI, and the other associated support,
Hopefully, we will soon have unicorns in the semiconductor domain coming from India. Definitely, sir. I'm sure, sir, SEMICON India 2025, the event, will also have a good impact on increasing this impact of the industry. So, sir, Amitesh, sir, if we come back to the event specifically, we heard that this year's event is bringing 50 plus global CEOs to India. What does it tell about India's growing importance in the global semiconductor value chain? Shipraji, actually, when the global CEOs or CTOs or CXOs come to India, it shows their confidence that they are now sure about the growth journey in semiconductor space. So when they come, they also plan something additional investment in the form of design or manufacturing or ecosystem support. And we are seeing very good traction from all these companies, global companies. If you see earlier announcements, so there were a lot of announcements done by the leading equipment manufacturers like Applied Materials, Lam Research. So they are putting up their investment, and further we are expecting that they will increase this investment. We have also seen design companies like AMD and NXP. They have also announced their investment in India. So we also see that other companies will also do so. We have seen support from global companies like IBM, NXP, and Infineon. All these companies have also supported Indian companies in one or the other way. They are becoming technology partner, or they are collaborating with Indian approved applicants to enable their packaging or manufacturing facility. So we are expecting a lot of synergy collaboration when they are coming to India, because they are all coming with a purpose, not only to participate in SEMICON. They are coming to work with their Indian head and Indian office, that what more we can do for India. And then they also act as a guide to us. So we always interact to those global CEOs. We try to learn from that what they expect more from the country perspective that government should do. So we are a very good listener and learner. In past also, when the semiconductor journey started, a lot of them suggested us about certain improvements, and we did that, and then we again approached them, and they said, yes, we never thought that this quickly government will respond to our suggestions. So this kind of trust we are trying to build, and since semiconductor is a global industry, as Ashok ji has also mentioned, so we want to be seen as a trusted supply chain partner in the global value chain. So that is our mantra, and as Honorable Prime Minister has said in one of the function, in every electronic device, we want to see Indian chips sitting there. So that is our goal. जी सर, थैंक यू सर. मैं आपसे भी आई लाइक टू आस्क अशोक सर अबाउट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन. हाउ इज इट शेपिंग अप एंड व्हाई इज इट क्रूशियल फॉर इंडिया? See, semiconductors is not only industry, but it's a technology backbone for everyone and worldwide. And being the complex value chain, no single country is able to meet entire value chain elements or constituents of semiconductor making. In fact, statistically, to make one chip, at least 5 countries are being reached, or the chip, some elements that travel 5 countries. So that's how it is complex and dependent. Now for India, though we have a great strength in the design of the chip, including the talent pool, as is mentioned by my fellow panelists, but on the manufacturing side, our journey has just begun. We did not have the robust manufacturing ecosystem or manufacturing footprint in the country historically. So now if we are to take a leapfrog and we are to go faster in terms of the manufacturing expansion, it is utmost important for us to create those global alliances. There are several countries, those have already taken the lead on manufacturing, particularly Taiwan, Japan, US, Korea, and also Netherlands, Germany, Singapore. Just a handful of them, not many. But as we have to take a leapfrog, we want to expand fast, it is a necessity for us to align with the global counterparts for multiple things. One is the technology for manufacturing, the processes, the know-how, the operational excellences, those have to be built up. As we start from, let's say, a new journey, we don't have enough of those. Number 2, we also need some skilled manpowers. So that also we have to dependent on the
global partners and collaborators. The good thing is in India, the large corporates like Tata, for example, Murugappa Group, Keynes, HCL, they are coming forward now. So which was not the case several years ago. Now the Indian corporates are coming forward in terms of putting up the plants and putting the finance as well, including that. But everything is dependent on these international cooperations to get those things together, including the IPRs. On the chip design side, things are a bit better. India has got a large talent pool, and that is actually being leveraged not only for a startup ecosystem, which Khaneja ji has been mentioned now, that because several global counterparts have their design centers operating in India, and that talent pool is also equally good and important for us to leverage for creating additional talent in terms of the training, inspiration, motivation, mentoring, as well as they themselves are setting up their own startup activities and creating the product creations into India. So overall, that is how it is going to help out. So that's in summary, the international cooperation is not only a necessity, but also a growth enabler for us. And India, as a government initiative, is already taking steps. Amit SC just highlighted what is going to happen in the SEMICON event. But parallelly, many viewers might be aware that India has already reached out to multiple countries and making those MAUs, which includes the Japan, the discussion, and Singapore, including Netherlands discussions, Europe, US, all this is going on. So these are all government-to-government engagements, in addition to the industry-to-industry and industry-to-academia engagements. Everything holistically adds up to the international cooperation which we are referring. And this is going to be a key enabler for us to leapfrog our manufacturing footprint particularly. Thank you, sir. To add this, Shipra ji, Yes, as Ashok ji was mentioning, that government has done a memorandum of understanding and memorandum of collaboration with 4 countries, USA, Europe, Singapore and Japan. And we are already in good discussion with other countries. And we are getting very good cooperation from Taiwan, South Korea, Netherlands, Germany. So all these countries are actively involved, and you have seen their interest also in this SEMICON, that they are coming. And they are also helping not from the point of view of technology transfer or technology collaboration. They are also helping us in skilling of manpower that is initially required for manufacturing and packaging also. Yes, sir. Thank you, sir. I'd like to tell our experts that as we are conversing around the event, more and more people are joining us on our YouTube Live. It's really great to see all of you joining us for this important topic on our 30th episode of Ask Our Experts. I thank you all for tuning in. Please keep writing your questions because I will be now asking your questions to our experts. And yes, I'll remind you that some of you will be chosen as Digital India Question Ninjas today. I'll announce the names at the end, and the winners will be needed to share their details on our official email ID, which is askourexperts.negd@digitalindia.gov.in. Your feedback matters. So if you have to tell us anything about SEMICON India, if you have any queries, if you have any questions about the semiconductor industry, I welcome you. I welcome your questions on our YouTube live chat. So sir, we'll take up the first question. It has come from Ashi Tripathi. She says, hello ma'am, I am a student from IIT Hyderabad specializing in semiconductor chip fabrication. Recently, there has been a lot of news around semiconductor fabrication and manufacturing in India. However, despite this momentum, we observe that companies are still hesitant to recruit. We are trained hands-on in core fabrication processes from lithography to CVD. Could you help me understand why this gap exists between the government's push through SEMICON India and the industry's readiness to hire? Amitesh sir. Yeah. So actually, approvals have been given in the recent past, and the first phase of process is setting up manufacturing plant. So setting up manufacturing plant generally requires civil construction work apart from other design and management works. So right now the semiconductor talent pool that is available for chip design or for supporting the manufacturing process, they are right now not hiring in bulk. However, they are also forming a core team. So core team generally consists of a small manpower of 50, 100, 150. And they are sending those core team to their technology partner premises
or to other countries where they have a tie-up or collaboration, or to Indian IITs and academic institutions where they have given a specific curriculum to train those students. So very soon, once they will come up to a certain slightly ready position, then they will start hiring the bulk. So typically, if you can talk about the Tata Fab, so direct recruitment of 5,000 and indirect recruitment of 15,000 of engineers will be expected, the technician and engineers together. So since it will take 2 years and 2 to 3 years time to set up the manufacturing facility, so they will time their recruitment according to that, depending upon the need. Right. So that's the reason. Initially it is slow, but gradually it will pick momentum, and it gives a very good opportunity for all semiconductor students who are taking curriculum and courses. In design, you have a lot of opportunities apart from these companies, because you can directly be recruited in design companies. So this ecosystem was earlier also they were recruiting. With the help of EDA tool support and other things, you can also start your own journey, startup journey, to become entrepreneur. So try to either you start your own startup, or you can join some startups who are already doing semiconductor designing of the chips. So, and wait for some time for packaging and manufacturing also. Thank you, sir. Ashi, please stay motivated and continue to work in this industry. So next question has come from Pradeep ji. He is asking, how does SEMICON India 2025 align with the government's vision of Atmanirbhar Bharat? So आत्मनिर्भर भारत के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर में अपनी क्षमता हो. अगर हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी अपने पास में नहीं है, तो उसके लिए हम कोलैबोरेशन करते हैं. और ये पूरा सेमिकॉन इंडिया पॉलिसी है, वो कोलैबोरेशन के ऊपर में आधारित है, जिसमें हम फॉरेन कंपनीज़ को भी बोलते हैं कि आप यहाँ इंडिया में आकर के मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, ताकि डोमेस्टिक मेक इन इंडिया स्टोरी हमारी, आत्मनिर्भर भारत की स्टोरी हमारी साकार हो. साथ में हम उनको प्रेरित करते हैं कि वो इंडियन कंपनीज़ के साथ में कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, या अपनी टेक्नोलॉजी को इंडियन कंपनीज़ को दे भी सकते हैं, ताकि इंडियन कंपनीज़ उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकें. जैसे कि हमने टाटा में देखा, PSMC उनका ताइवान की जो कंपनी है सेमीकंडक्टर की, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी दी है और टाटा एक फैब्रिकेशन प्लांट लगा रहे हैं. तो ये आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी एक कोशिश है. सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में हम देख रहे हैं कि हमने स्टार्टअप्स को प्रमोट किया है. तो स्टार्टअप्स जब बनेंगे तो हमारी अपनी डिज़ाइन चिप्स होंगी, और वो फैब्रिकेशन के लिए हो सकता है कि टाटा फैब पर आएंगी. हमने 8 पैकेजिंग प्लांट्स को भी अप्रूवल दिया है. सो पैकेजिंग भी यहाँ पर होगा. तो एक जर्नी जो है डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, ये पूरा का पूरा अनफोल्ड हो रहा है यहाँ पर. इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारी हमारे केमिकल एंड गैस इंडस्ट्री जो कि वर्ल्ड में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लेकिन वो सेमीकंडक्टर ग्रेड के केमिकल और गैसेस नहीं बनाते हैं. तो अब वो भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं. जो फॉरेन कंपनीज़ हैं जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सप्लाई कर रही हैं अपने गैसेस को, हाई प्योरिटी केमिकल एंड गैसेस को, वो अपने या तो खुद वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, या कोलैबोरेशन के माध्यम से जॉइंट वेंचर में आ सकते हैं, या वो टेक्नोलॉजी दे करके हमारी इंडियन कंपनीज़ को इनेबल कर सकते हैं कि वो उस लेवल तक जा करके हाई प्योरिटी ग्रेड केमिकल गैसेस और मटेरियल बना सकें. तो ये पूरा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ही एक कदम है. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये आपको और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और साफ़ होता जाएगा कि कैसे हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ इसमें ग्रो कर रही है. Thank you, sir. If I may just Sure. just add to what Amitesh ji just said. See, semiconductor industry is one of those industries which has a very high potential for secondary job creation. Apart from the main jobs, which is either in design or in fabrication, the secondary job creation, as Amitesh ji said, in terms of the support, for example, chemicals and gases, that is on a very high number. Okay, much higher than the conventional numbers. So that is another step which will help us to create domestic jobs and go along with. Just to add statistic, it is 1:10. 1:10, direct job yes. in the semiconductor industry adds to 10 additional jobs. 10 So additional job secondary prospects are jobs created. Quite high. Just to add on the other point here, on a semicon perspective, out of 350 exhibitors, we have half of them Indian companies. There are 18 countries, those are demonstrating. So you look at now the platform where
the Indian and global companies are coming together, and that's a good learning opportunity for the Indian companies to learn and forge some alliances, joint ventures, and that is the step towards the Atmanirbhar Bharat. And at every stage, right from material to design to the wafer processing, assembly, test, packaging, entire gambit is covered into this event, and that is going to create additional these opportunities for towards our Atmanirbhar Bharat initiative. इसको एक और एग्जांपल से भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग ने पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में EMS प्लेयर जो बेसिकली असेंबली का काम होता है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी मेजर्स लिए गए थे, जिसमें कि बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स थे जो 14, 15, 16 से स्टार्ट हुए और अभी तक चल रहे हैं। शुरू में हम लोगों ने फेज मैन्युफैक्चरिंग प्लान कहा था, जिसमें कि डिफरेंशियल ड्यूटीज़ वगैरह अनाउंस किए गए थे। बाद में हम लोगों ने स्पेक्स और कुछ और पॉलिसी लेके आए, जिसमें कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे थे। फिर उसके बाद बिग पुश देने के लिए PLI स्कीम आया। PLI स्कीम में हमने देखा कि मोबाइल और IT हार्डवेयर और सारी चीज़ों के लिए हम दे रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा स्केल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है। वी ऑल नो कि कितना गुना हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पहले से बढ़ गया है। तो एक EMS का प्लेयर से क्या होता है कि वो एक डिमांड क्रिएट करता है कि अब उसको सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री स्टार्ट हो। सेकंड उसका लेवल होता है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। अभी हम लोगों ने रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI लेकर के वो आए हैं। अब वो कंपोनेंट जब बनना शुरू हो रहा है तो नाउ दे नीड डीपर वैल्यू चेन, उसमें सेमीकंडक्टर चिप्स आते हैं। अब सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए हमारी ये पॉलिसी चालू हो गई है, जिसमें डिज़ाइन, फैब्रिकेशन और पैकेजिंग सब होगा। अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो करीब करीब 15 से लेकर के 35-40% तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सेमीकंडक्टर चिप्स का उपयोग होता है। अगर वो छोटी मोटी एप्लीकेशन है तो 10 से 15% सेमीकंडक्टर चिप्स का उसमें वैल्यू होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टाइप की चीज़ है और उसमें और फीचर्स फ्यूचर में आएंगे, उनको भी ध्यान में रखें, तो 30 से 40% तक का उसमें सेमीकंडक्टर चिप्स का कॉस्ट होता है। तो अगर ये कैपेबिलिटीज़ आप देख रहे हैं, जो एक जर्नी है, असेंबली से कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग से सेमीकंडक्टर चिप्स, डिज़ाइन, फैब्रिकेशन एंड पैकेजिंग, और इसके एक और पैरेलल में हमारी एक्टिविटी चल रही है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन की। तो जब प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे और ODMs को भी डेवलप करने की हमारी मंशा है, उसके लिए भी हम लोग कुछ और भी इनिशिएटिव लेंगे अभी। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन और ODMs का मतलब है जो डिज़ाइन बनाते हैं, उनके डिज़ाइन के हिसाब से सेमीकंडक्टर चिप्स हो या कंपोनेंट्स हो, उनके लिए वो डिसीजन मेकिंग बॉडी हैं वो। तो अगर ये ODM और प्रोडक्ट डिज़ाइन दोनों हमारे कंट्री में होने लगेगा तो ये प्रोसेस और फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, और बहुत जल्दी हम देखेंगे कि वैल्यू एडिशन हमारा काफ़ी बढ़ जाएगा इन सब चीज़ों के बाद से। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये अमित टीस जी से आया है। ये पूछते हैं, बियॉन्ड लार्ज फैब्स व्हाट रोल डू यू सी फॉर MSMEs एंड इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स in the semicon value chain, especially in areas like testing, packaging and specialized chip design? तो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये इंडस्ट्री से बड़े लोगों के लिए, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है। जैसा कि अशोक जी ने बताया कि इसमें एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट है, और 1:10, 1:7 इस तरह के मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट इस इंडस्ट्री में लागू होते हैं। इसमें जो केमिकल, गैसेस, मटेरियल्स है, और जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का भी एक इकोसिस्टम यहाँ बन रहा है, उसमें जो कंपोनेंट वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, और उनसे रिलेटेड जो R&D है, रिसर्च है मटेरियल्स में, ये सब अपॉर्चुनिटी पैदा कर रहा है SMEs के लिए और MSMEs के लिए। और जो हम लोग के इनिशियल इंटरेक्शन हुए हैं इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जैसे अप्लाइड मटेरियल, लैम रिसर्च या और भी जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन लोगों ने देखा है कि इंडिया में काफ़ी SMEs ऐसे हैं, MSMEs ऐसे हैं जो कि प्रिसीजन इंजीनियरिंग में पहले से काम कर रहे थे, चाहे वो एविएशन सेक्टर के लिए हो, चाहे स्पेस सेक्टर के लिए हो। तो उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, और ऐसे बहुत सारे और जो हमारे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी अपने इकोसिस्टम में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, गैसेस, मटेरियल्स, और जो एंसिलरी इंडस्ट्री है जो सेमीकॉन इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं, जैसे वहाँ पर होटल इंडस्ट्री की ज़रूरत है, वहाँ पर स्कूलिंग, हॉस्पिटल फैसिलिटी, पूरी की पूरी टाउनशिप की ज़रूरत है वहाँ पर। इन सब चीज़ों में देखता हूँ कि बड़ी मात्रा में SMEs, MSMEs की हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी।
इसमें वाटर सप्लाई होता है, ट्रीटमेंट प्लांट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, लॉजिस्टिक्स है, वो सारा ऐड होता है. तो दीज आर ऑल स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज. और पर्टिकुलरली सर ने जो बताया केमिकल्स और गैसेस, India has already a good robust gases and chemical manufacturing, but we do not make that to the purity level as desired by the semiconductor industry. So there is opportunity for these companies to step up their technology as well as the purification plants. And these are not a very large corporates actually. Even a medium enterprise can do those because there are about 70 plus gases and chemicals. Those are required while these foundries would become operational. So उसमें सारे small medium enterprise को opportunities मिलेगी. और सर ने भी जस्ट बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स का वैल्यू एडिशन का टॉपिक, उसमें तो एमएसएमई का ही पूरा सपोर्ट है, उसमें एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ है. पीसीबी बनेगा, पैसिव कंपोनेंट्स बनेंगे, कनेक्टर्स बनेंगे, वो सब ऐड होता है. एंड दैट इज़ ऑल एमएसएमई कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली इन इंक्रीजिंग दैट वैल्यू एडिशन, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द एज आई मेंशन द होलिस्टिक व्यू ऑफ द टोटल पॉलिसी फ्रेमवर्क. उसमें वो काफ़ी योगदान मिलेगा उसका. Right, sir. So we'll take the next question. It's from Meet Patel. He's saying that the countries who are great at semiconductor industry have established great collaboration of academia and industry. What is India's strategy to make this happen in India? यहाँ भी एकेडमिया और इंडस्ट्री का काफ़ी R&D सेटअप होगा, कोलेब्रेशन होगा. अभी जो स्टार्ट हुआ है उसमें जो हमारे अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स हैं, दे आर टेकिंग हेल्प ऑफ एकेडमिया for two things. One is that skilling. So they have given their specific curriculum to train students for their own needs. Second is that they are also collaborating for R&D activities. जो हमारे 10 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, सब लोगों ने अपना एक R&D रोड मैप भी दिया है. और उस R&D रोड मैप में सब लोगों ने 1 या 2 या 3 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ में कोलेब्रेशन प्रपोज किया है, जहाँ की वो अपने फ्यूचर R&D रोड मैप पर काम कर रहे हैं. तो इस तरह से जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बाकी जगह जैसे हुई है वो यहाँ भी होगी. और जैसे जैसे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हमारे अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे डिफरेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन उनके पार्ट बनते जाएंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि कौन सा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन किस चीज़ में आगे है और उसके हिसाब से वो कोलैबोरेशन करते हैं अपना. तो मेरे ख्याल से और फिर गवर्नमेंट भी कई पॉलिसी लेके आ रही है जिसमें जो सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड R&D का एक्सपोजर होगा उसको हम बढ़ाएंगे. जी सर. Just to add to what Amitesh ji said, so in the Chip to Startup program, traditionally we had the participation only from academic institutes till now. इस साल से C2S program में there is a special category in which apart from the academic institutes can collaborate with one of the startups and they can pitch in for a particular solution which will be funded by the ministry. एंड हमारे पास ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पे ये इस तरीके का कोलैबोरेशन बहुत एपरेंट है. द स्टार्टअप्स ब्रिंग इन देयर इंटेलेक्चुअल कैपिटल, दे ऑल्सो ब्रिंगिंग सम ऑफ द फाइनेंशियल पावर एंड मसल दैट दे मे हैव, एंड देन दे वर्क टुगेदर विद द रिसर्चर्स फ्रॉम द एकेडमिया एंड देन दे आर ब्रिंगिंग आउट सॉल्यूशंस. एंड दिस वी हैव सीन is a very good way of collaboration, and it is in my opinion a logical step, because tomorrow a lot of these young students who are there in the colleges would go out and become entrepreneurs. Yeah. So today they are in C2S, tomorrow they will graduate to the DLI scheme. Yeah. Definitely sir. Thank you sir. अगला क्वेश्चन एक स्टूडेंट से ही है. He is Ankit Bhandari. He is saying, hello sir, I am Ankit Bhandari, just graduated from a tier 3 college. I am currently finding opportunities in the electronics and engineering sector. I am reaching out to seek your valuable guidance regarding the OSAT program. How could you kindly guide me on how I can prepare and align myself for upcoming opportunities in this stream? इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो आएंगी उसके नोटिफिकेशंस को देखते रहें. उनको मालूम है कि गवर्नमेंट ने किन कंपनियों को अप्रूवल दिया है, तो उनके वेबसाइट को देखते रहें. दूसरा कि ओसेट से रिलेटेड स्किलिंग को बढ़ाएं. तो उसमें बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जिसको कि जा करके उनको सर्टिफिकेट भी मिलता है. तो उसमें वो कोशिश करें कि अपने जो स्किलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि कंपनी के प्रोफाइल को मैच करेंगी, उसके लिए कंपनी के प्रोफाइल पर वेबसाइट पर जाकर देख भी सकते हैं कि उनको किस तरह के लोग रिक्वायर्ड हैं इस फील्ड के लिए. उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें. जी सर.
Sir, Preeti Razdan से अगला question है. She is asking, in India, will we see admissions placements in electronic stream overtaking computers? आप बताएं. I think we should not be comparing those what is overtaking what. We should be looking at where the additional and tremendous job opportunities are getting created, and based on the passion and interest of the student and their desire of career development, we should look at these opportunities. Those are unfolding. It's true in terms of the growth rate. The semiconductor and electronics related opportunities would show a substantial growth rate compared to the traditional computing jobs. But also we have to look at the AI related lot of new opportunities also existing, which some people can also classify as a computer related job. So let's not worry about which is overtaking what. We should pay attention to the unfolding opportunities and the career possibilities where you could build your career depending on your interest and passion actually. Because some people may have flair for hardware design, chip design, or getting into the manufacturing sector. Somebody may have flair for algorithm development, go to the AI and other stuff. So this is how we look at. The fundamental point here is actually there are tremendous opportunities, those are unfolding now. And India, having this large talent pool, would find a way. And just to add to Ashok ji, the devices that we use in our daily lives, whether they are wearables, personal devices, or computing devices, or the back-end servers, almost every device needs semiconductors. So बाकी कुछ हो ना हो, कम से कम सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का फील्ड इज़ एन एवरग्रीन फील्ड जिसमें कि बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे अशोक जी ने कहा. So again, my request and my advice to all the youngsters who are listening to this is, this is an industry which is I may call the sunrise sector, और ये sunrise काफ़ी देर तक रहने वाला है. Yes sir. हमेशा के लिए रहने वाला है एक्चुअली. और ये ऐसा फील्ड है जिसमें कि अगर आप काम करते हैं तो आपको लगेगा कि रियली हमने कुछ बनाया. अगर आप कोई चिप डिज़ाइन करते हैं, उसमें काफ़ी फंक्शनैलिटी है, या फैब्रिकेट करते हैं या पैकेज करते हैं, तो पैकेजिंग में भी पैकेजिंग अपने आप में एक नया मोड़ ले रहा है. उसमें एडवांस पैकेजिंग इज़ द न्यू मंत्रा, जिसमें कि आप एज ए डिज़ाइनर पहले सोचते हैं कि कितनी सारी चिप्स को, किस तरह की चिप्स को कैसे एक दूसरे के साथ में जोड़ें जिससे कि वो मोस्ट एफिशिएंट वे में काम करे. तो इन सारे चीज़ों में काफ़ी स्कोप है और आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगा. पहले इंडस्ट्री हमारे यहाँ नहीं थी, केवल डिज़ाइन का हमारे यहाँ इकोसिस्टम था. अब जो मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग और सपोर्टिंग सिस्टम, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो मटेरियल साइंस जो पहले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, केमिकल और गैसेज, वो भी हम लोग सोचते थे कि हायरार्की में नीचे जाता था बाकी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस था उनके तुलना में. अब इस इंडस्ट्री में वो ऐसा नहीं है. सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सबका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. बिना नोवेल मटेरियल्स के और बिना नए नए तरीके के केमिकल के यूज़ के ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है. तो सबका ऐसा महत्व है. फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, केमिकल का, मेटलर्जी का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो है ही, कंप्यूटर साइंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सब चीज़ों को मिलाकर के ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री चलने वाली है. और ये सेमीकंडक्टर मैंने बताया था पहले कि ये ग्लोबल बिजनेस है. तो जो भी व्यक्ति इसमें सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन करता है या मैन्युफैक्चरिंग में है, देयर इज़ अ गुड चांस ही गेट्स अ ट्रमेंडस सेटिस्फैक्शन, बिकॉज वो चिप नॉट ओनली हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत का काम कर रही है बट ऑल्सो एक्सपोर्ट होगा. ये ग्लोबली इसमें यूज़ किया जाएगा इसका. तो दैट्स अ हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एंड हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. राइट सर. सर समय का अभाव होने के कारण हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस और ले लेते हैं. ये केशव जी पूछ रहे हैं कि DLI स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर सेमीकंडक्टर डिज़ाइन. हाउ वेल इज दिस स्कीम एड्रेसिंग द एक्चुअल नीड्स ऑफ द स्टार्टअप्स? Okay, so as I said, DLI scheme was put in place to address some of the disincentives that we had in terms of the design ecosystem. So उसमें there is a provision for fiscal incentives. Now the argument could be those fiscal incentives may not be sufficient for certain class of products, which is understood, and that is why there are internal discussions to have some changes coming up in the scheme. Apart from that, support for the EDA tools
support for the IPs, support for the MPW fabrication is definitely going a long way to encourage the ecosystem. However, we need to do more. We realize, and we have learned from this scheme. Typically, what happens is that today we are encouraging the designers to start. We will now need to encourage them to finish, because once you finish, the product will hit the market, and then it will scale up, and then the revenue will start pouring in. So typically, it takes about $50 to $100 million, and anything between 5 to 7 years to go to a revenue stage. So it's a long haul. We were just discussing before we entered here that it's a 5-day test match and it is not a T20. So we need to be patient. We need to make the market available to them. We need to encourage more VC funding support that needs to come in. So there is this famous valley of death which happens between when you have designed a prototype to the time you scale up. And there is this value of death where a lot of startups and MSMEs will die in that value of death unless we build a bridge between prototypes to the end solution. Right. So the government is focusing on that. In fact, a lot of stakeholder consultations have happened. The DLI scheme is one of its kind. I mean, people may argue that it has some flaws, which every scheme has. But then the intent is good. The government is listening to the feedback coming from the industry and stakeholders. And we are pretty confident that if we continue to work patiently, we will start to see the results. Right, sir. शिप्रा जी, इसमें मैं कुछ एक ये ऐड करना चाहता हूँ जी सर, कि जो गवर्नमेंट अपना पॉलिसी सपोर्ट दे रही है, उससे हमारा पर्पस ये है कि इंडियन कंपनीज स्टार्टअप के रूप में बनाएं और बाद में वो बड़ी कंपनी के रूप में कन्वर्ट हो। आज जो हम देखते हैं, इनवीडिया है, ब्रॉडकॉम है, कॉलकॉम है, ये सारी कंपनियां मल्टीनेशनल हैं और वो बहुत बड़े साइज़ की हैं। इनवीडिया सेमीकंडक्टर की नंबर 1 कंपनी बन गई है अगर उसका हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखें। पूरे सेमीकंडक्टर जर्नी में जो चिप्स का कॉस्ट है, उसमें लगभग 50% डिज़ाइन का कॉस्ट होता है। तो डिज़ाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है और गवर्नमेंट का ये पुश है कि हम पहले पॉलिसी सपोर्ट करें स्टार्टअप्स को, ताकि वो चिप डिज़ाइनिंग में आगे बढ़ें, ग्रो करें और अपने हमारे एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, कॉलकॉम बने आगे चल करके। और जैसा कि कन्या जी ने बताया कि ये T20 नहीं है, सो वी आर हियर फॉर 1 decade, 2 decade, 3 decade टू ग्रो दीज कैपेबिलिटीज़। तो ये हमारा सबसे रिक्वेस्ट है कि ये पेशेंस सब लोग रखें। हमारी जो जनता है उनको भी समझना चाहिए कि ये पेशेंस गेम है। चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, बहुत कॉम्प्लेक्स चिप्स हो तो उसमें 5-7 साल भी लग जाते हैं। अगर सिंपल चिप्स है तो 1-1.5 साल में भी डिज़ाइन हो जाता है। सिमिलरली जो हमारा फैब्रिकेशन है, जिसमें फैब इसको हम बोलते हैं, फैब के फैब्रिकेशन में 2-2.5 साल से लेकर के 3-4-5 साल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कैपेसिटी आप बना रहे हैं और वो डिमांड को देख करके, कस्टमर्स को देख करके स्केल अप करते हैं। तो इसलिए ये जर्नी पेशेंस की है, हिम्मत की है और जो गवर्नमेंट पुश दे रही है उसको अवेल करने की है। और अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट का एम है कि हमारी अपनी कंपनी जो है भारत के चिप्स डिज़ाइनिंग में हेल्प करें हमको, उस सपने को हम साकार करें। जी, थैंक यू सर। आज का सर एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। ये टेक्नोफ्यूज के नाम से आया है। व्हाट कोर एंड IT रिलेटेड स्किल्स शुड वी फोकस ऑन टू स्टे एम्प्लॉयबल एंड लेटर ट्रांजिशन इनटू द सेमीकंडक्टर सेक्टर? So towards semiconductor, one is obviously the soft skills are always important, so that is given, which is a basic bread and butter I would call. But most important thing is this sector is very dynamic. So it is very important that you continue to stay abreast of the new developments and new technologies those are unfolding, so that you are meeting those future required talent and skilling needs actually. So in that, most important thing is to, if you are in a design field, get access to the design tools, because design tools are very important. The EDA, electronic design tools we call it in the semiconductor industry. Without that, no chip gets designed or no chip will get fabricated actually. So that's the most important thing. And there are, I think, about 300 plus educational institutes we just narrated here. C2S program, they have the licensing available. So that is one aspect. Second is, there are several institutes now, they have enhanced their curriculum and they are also rolling out the training programs, particularly for a manufacturing sector. So keep tune of that
as which are the institutes. Particularly, there have been some programs run already, including ISA. We are involved at IIT Bhubaneswar, IIT Guwahati, IIT Gandhinagar, and more such thing would be rolled out and announced. So keep track of that, because these are the new technology-related, manufacturing-related jobs, aspirations. If you have such programs, are very, very important for you to stay tuned with that and get the access to those training materials, and then you remain employable. Last thing would be, wherever you are, whichever job you do, it will be important that you continue to step up your ladder with regards to the newer tools and newer technologies and newer design methodology or manufacturing aspects, because our industry is very dynamic and it keeps growing pretty fast and keep changing its colors pretty fast. Thank you, sir. That's definitely a very great piece of advice for all the students who are preparing to come into this industry. Sir, last question would be from my side. What would you give as the one compelling reason for our academia, for our industry leaders and for our innovators to register for SEMICON India? देखिए, जैसा मैंने बताया कि इसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो एकेडमिया की बात करें तो एकेडमिया के लिए ये प्लेटफॉर्म है कि R&D अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी है, स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है। तो जो भी कंपनी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए आ रही है, चाहे वो सपोर्ट सिस्टम हो केमिकल गैसेस मटेरियल का, या फैब्रिकेशन का हो, या पैकेजिंग का हो, या इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का हो, सबको एकेडमिया के सपोर्ट की ज़रूरत है। बिकॉज R&D वहीं होता है, स्किलिंग वहीं होता है, तो उनके लिए वो है। इंडस्ट्री के लिए है कि जैसा कि हमारे अशोक जी ने बताया कि 350 से ज़्यादा कंपनीज में से आधी इंडियन है, आधी टेक्नोलॉजी कंपनीज बाहर से हैं। तो वहाँ पर कोलैबोरेशन है, तो इंडस्ट्री के लोग को इसलिए आना चाहिए कि लॉट ऑफ कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ इज देयर। जो मैन्युफैक्चरर्स इन जनरल है, जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहते हैं, उनके लिए पॉलिसी मेकर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और डिमांड क्रिएशन जो हो रहा है उसके भी लोग यहाँ हैं। जो एप्लीकेंट्स हमारे अप्रूव्ड हैं, दे आर क्रिएटिंग डिमांड फॉर देम, वो भी यहीं मौजूद हैं, तो उनके लिए उस तरह का है। और R&D तो मैंने तीनों के लिए एक्सप्लेन किया कि कैसे इंडस्ट्री, एकेडमिया और जितने इनोवेटर्स हैं, इनोवेटर्स तो हर फील्ड के लिए ज़रूरी हैं। जो आजकल जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है, उसमें उसका सेमीकंडक्टर में काफ़ी ज़्यादा उपयोग है, और सेमीकंडक्टर्स का जो डिमांड है उसमें 25% से ज़्यादा डिमांड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण से पैदा हो रहा है। चाहे वो डेटा सेंटर के लिए स्पेशलाइज्ड चिप्स का डिमांड हो, या हम हाई पावर कंप्यूटिंग के लिए अलग तरह के चिप्स का डिमांड हो, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए हो, इन सब चीज़ों के लिए तो इनोवेटर्स के लिए काफ़ी स्कोप है। हमारे सेशंस भी जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी उसमें सेशन है, और AI समिट 2026 भी हो रहा है हमारा नेक्स्ट ईयर, जिसमें कि इंडिया उसको होस्ट कर रहा है, और एक बहुत बड़ा इवेंट ये भी होने जा रहा है। उसके हिसाब से भी हम लोगों ने उसमें कुछ सेशंस रखे हैं। जी, थैंक यू सर। सो दोस्तों, सेमिकॉन इंडिया विल बी अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो सेमीकंडक्टर सेगमेंट्स हों, चाहे वो वेरियस इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो वेरियस और कोई सेक्टर्स हों, चाहे वो एकेडमिया हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो इनोवेटर्स हो। सो अपॉर्चुनिटीज़ की एक दुनिया होने वाली है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रजिस्टर फॉर सेमिकॉन इंडिया 2025 event today itself. So this was a very insightful session. I give a big thanks to our experts कि हमें डिटेल में आपने इतना कुछ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और इवेंट के बारे में बताया। एंड माई स्पेशल थैंक गोज टू आवर व्यूअर्स, जिन्होंने समय निकाल के हमसे इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे और हमें और भी इस इवेंट और इंडस्ट्री के बारे में जानने का मौका दिया। Now I will announce the names of our Digital India Question Ninjas. Their names are Ashi Tripathi, Meet Patel and Keshav. I congratulate all three of you for winning the Digital India Question Ninja ka reward. I'll request you to kindly share your details, that is name, address and the question you asked on our email ID askourexperts.negd@digitalindia.gov.in. और क्योंकि हम यहाँ पे सेमिकॉन इंडिया इवेंट की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि कौन से लिंक पे जाएं जहाँ पे जाके हम रजिस्टर करें। सो काइंडली नोट डाउन द URL फॉर द लिंक वेयर यू कैन रजिस्टर फॉर सेमिकॉन इंडिया, दैट इज www.semiconindia.org। यहाँ आप जाएंगे, जैसे ही रजिस्टर करेंगे एंड आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द टीम यू विल गेट योर डिजिटल बैज और ई बैज ऑन योर रजिस्टर्ड email ID and mobile number.
मैं आपको और भी बताना चाहूँगी कि आज शाम को 5:30 बजे हमारी मिनिस्ट्री, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रही है रिलेटेड टू दिस इवेंट सेमिकॉन इंडिया 2025, जो लाइव होगी डिजिटल इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर. सो आई रिक्वेस्ट यू कि 5:30 बजे आप ज़रूर वहाँ पे जुड़िए, जहाँ पे आपको सेमिकॉन इंडिया इवेंट के बारे में और इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी. If you have missed out on any of the information related to Semicon India in our today's program, then you can come back to this link. ये link पे हमारी ये conversation आज की हमेशा live रहेगी. आप दोबारा आके हमारी conversation को सुन सकते हैं और advice को note down कर सकते हैं. You can learn more about other Digital India initiatives on our websites digitalindia.gov.in and negd.gov.in. Till we meet again in the next episode of Ask Our Experts, this is Shipra Abraham signing off. Stay curious, stay connected. Namaskar. Thank you.